Hello, everybody. Welcome to Professor Kalinga, and we are having our guest Anubrata Roy from MBFT. Welcome to the show and congratulations. Thank you for the invitation. I love your channel and knowledge of Indian football. Like we are still not, we are not still that famous mainstream yet, but we are still, following our passions. यही बात होना चाहिए. Passion के लिए काम करते हैं. तो दो लोग Exactly. passionate We लोग अगर बात all are करते हैं same. तो बहुत लंबा लाइव होने वाला है. We all are in the same boat, brother. We all for the passion and but the congratulations for winning today match. It was like no, it is not it's not just a match. It's just an emotional match because of the players who represented today. So how are you feeling? Your face is saying everything, but anyway, you can express. No, we were actually surprised of the how we played actually. Like our gameplay was solid actually. Defense को देखो, attack, midfield, everything was solid. Nothing really went wrong. What do we expect from these, youngsters? The average age of this team was like what, 25, 26, if I'm not very wrong. Uh, so it's very evident that these guys will make some mistakes, but they didn't. If if they could, the moment they made mistakes, they recovered from that. So they had a counter of those mistakes. ये लोग अपना काम जानता है. So they were playing like they were playing regular. They are getting regular times in the main team. So they really didn't, made some much mistakes and they played. They get their basics right. Basics ठीक कर रहे हैं वो लोग. So that mattered. Like if we talk about Kerala, they didn't do their basics right. They were, mispassing. They were, tackling. And Milos Dincic, that their captain, he is not doing these basics right. Like Salahuddin was like, pocketed him left and right. So that stature of player, you can't believe that, you can't let him do that. You can't expect him to do that, those mistakes. So and lastly, like Jesus Jimenez, he missed a lot. He missed two golden opportunities. If I'm not very wrong, I actually saw it live. So Kerala didn't do their basics right, but on the other hand, our players did the basics right. They didn't do anything extraordinary like dominating the defenders or cutting past them like Messi, but they did the basics right and we won. And lastly, Exactly. I want to end this part like with we kudos to our coach Basto and De Cardozo. These two guys are actually honest to the players. These guys are very honest to the players, and they didn't exaggerate anything. Like these guys are will score 5 to 6 goals, or this guy will lose 5 to 6 goals. They only simply said that this is a good opportunity to display their gameplay, and they did. They really displayed their gameplay. Why is they are in Mohun Bagan? Why they are capable of playing in Mohun Bagan? Why they are wearing the badge? They shown that in the pitch. So that mattered. Exactly. They didn't talk extra or very lowly of themselves. They did the job basically. Truly, we need to appreciate the coach, the Indian coach, a fantastic job done. Kerala Blasters coming in high flying against East Bengal. So the expectations was high. Even you, me, or any MB fan or any rival fan could have thought, थोड़ा टफ तो होने वाला है. It's not easy. केरला ब्लास्टर है, फॉर्म में है, नया कोच आया है, एक सिंग दिख रहा है. Like everyone is talking about that positiveness about. Okay, so that positiveness about the Kerala Blaster. So the momentum was more on the positive side about Kerala Blaster. That yeah, they might be on paper a good team against Mohun Bagan because it was declared that कि मोहन बागान आ रही है अपनी youth team के साथ. तो एक माइंड में सेटअप तो हो ही गया था. But the way things turned around, the way guys came up, so like they're gelled up. Like लग नहीं रहा था कि यार पहली बार एक पूरी ग्रुप एक साथ खेल रही है. Look like they gelled up. Even they didn't play against any match against your Goa team, but look like they played a lot of matches within their group. They're very confident. They are able to sync. They are able to understand doing the current right run at the right moment. So everything was perfect. By the way, before coming into
other points. So just wanted to talk about the Indian coach who did a fantastic job, as you said. He made it very simple, very easy for the youngsters, and give that passion that hey, go and enjoy yourself. We'll see what will go. Like there's no problem. You just go and enjoy, and the team started enjoying it. How do you see this coach, Indian coaches slowly gearing up, doing well? Not only Mohun Bagan, there are other clubs where Indian coaches are doing really well against the foreign coaches. How do you see the Indian coaches breed are going up day by day? Uh, Particularly speaking about Bastov Rai, this guy is honest. Honesty should be the one of the keys, and he's a good communicator as well. But on top of that, he is honest. He knows his weaknesses, he works on that, and he knows his strength. So the moment you are honest with yourself, you already overcame your 60% of your problems in the team. He knows his players, he knows his guys, he knows his teammate, his mates who are working on and off the field, the physiotherapist, each and everyone. The moment you create bonding with them, you also created solve 20% of their problem. So both of these coaches, Diki Cardoso and and Bastav Rai, are like they are like in the fathers. They are like father figures to the club. Bastav Rai is a father figure. He has been working with the club for 3 years, 3.5 years, but he's like a father figure to these boys. He knows he knows that these guys won't be able to do an extraordinary job. They are still young. They need to develop. They can't do stuff like what is Jamie McLaren are doing. No, they need to develop themselves. By then they can become Jamie McLaren. So in order to do that, you have to be a good communicator with the players, and we are seeing the result in the press conferences, in the post-match bits, in everywhere. Bastav Rai said that they are here to they are here for the exposure, and they want to enjoy the game, and they did the basics right. This is why coaches are meant for. You need to do the basics right, then you will do the extraordinary work. Each and every Indian coach's mindset is currently like this. You need to do your basics right, and Bastav Rai did exactly we wanted him to do. No sane MB fan was expected like this result. Even from me, from my brothers from MBFT, everyone was skeptical, but they had a hope. They Yeah, had a hope that hope is someone there. will come out, Yeah. something will come out of this game. Mm, Like this player will mm, get game time. Management will be aware that this player is very ready for the first team. Like Salahuddin is really fit for the first team action. Ashik Kurunian is back from a huge injury, and he's proving himself the worth, and he will get some game time in the national team. So it was a challenge for all of the players, and they delivered. That matters the true, most. true. And that mattered the most. Agreed. No buts and ifs, no exaggeration. They just did their jobs. This is why Indian coaches are getting back in the field because of the honesty. Honesty should be the key, and great communication should be the key. एग्रीड एग्रीड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी में बोलिए, ठीक है, विल स्टार्ट विद दैट. पहला क्वेश्चन रहेगा, विशाल केत तो आपका मतलब सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ चुका है. अब ये छोटा विशाल केत कहाँ से लेके आया भाई? ये तो 2-3 मैच It's not खेला है और सब में उसने खतरनाक परफॉर्मेंस दिया है. कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, क्या उसने डिस्प्ले किया हर एजेंट को, हर क्लब ओनर को कि मैं भी हूँ नेक्स्ट अपकमिंग, और मोहन बागान के लिए भाई मुझे भी एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा वाला दो, आई डिजर्व मोर. हाउ डू यू सी? फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, आई एम no. टेलिंग यू. Personally, ही इज द वन ऑफ द मुझे की लगता है प्लेयर टुडे. personally मुझे लगता है both विशाल केत and धीरज सिंह are different kind of players, different kind of goalkeepers. विशाल के कुछ अलग अलग करता है, धीरज को अलग. सो दोनों को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है. दोनों ही गोलकीपर है, बट एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड डिफरेंट सॉल्यूशंस. और धीरज इज अ प्रूवन गाय. धीरज इज अ प्रूवन गाय. व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ? आई डोंट नो. धीरज ने एसीएल एफसी चैंपियंस लीग जो हुआ था लॉकडाउन में, और जुरांग फेरंतो जब कोच था, उसमें वो टीम ऑफ द सीजन में था. एक इंडियन प्लेयर, मतलब सिर्फ 6 मैचेस खेला था गोवा ने, वो नॉकआउट में भी नहीं गया था, फिर भी वो टीम ऑफ द सीजन में था. दिस स्पीक्स वैल्यू. मतलब जितना, और गोवा उतना अच्छा परफॉर्म किया है, बट जो अलग जो टीम था उसकी तरह परफॉर्म नहीं किया, फिर भी वो टीम ऑफ द सीजन में था. क्योंकि द अमाउंट ऑफ सेव्स, द अमाउंट ऑफ एक्सजी ही प्रोड्यूस्ड,
इसके वजह से ये हुआ है। और देखो तुम अगर विशाल केत और धीरज को तुम अगर साइड बाय साइड कंपेयर भी करो, उनका फिजिकलिटीज में विशाल केत किंतु फिजिकलिटी में बेटर है। अब मैं यस देखूं यस यस, विशाल केत इज इसका मोर हाइट का एक फिजिकल, इशू बट धीरज इज है। नॉट दैट फिजिकल ऑफ विशाल केत, बट वो हो जाएगा इन टाइम फ्यूचर। विशाल अभी धीरज का कितना एज हुआ है, 25 26 24 25, मैक्सिमम। या 25 He has a 25, या lot of game time, left for him. और विशाल केत भी इस टाइम से ही स्टार्ट किया था वो ये उसका चीज विशाल केत 23-24 में मतलब if I'm पिकअप not किया very था। wrong, he was not that of a good goalkeeper right now. Currently, he is. He या turned a good goalkeeper after the age of like 26, 25. यस तो अभी उसका ब्रेकआउट सीजन हुआ है, मतलब थोड़ा पहले होना चाहिए था, मतलब अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल के आया है। तो दोनों ही एक स्टैचर का प्लेयर नहीं है, फिर भी दोनों का डिफरेंट डिफरेंट आउट प्लेइंग स्टाइल्स। तुम अगर देखो धीरज ने थोड़ा बॉल प्लेइंग कैपेसिटी कुछ अच्छा है, अगर तुम देखो बॉल प्लेयर वो अच्छा बॉल प्लेयर, मतलब विशाल का कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है थ्रू द हैंड्स, मतलब जो यस हाथ में जो देके डिस्ट्रीब्यूशन वो यस यस, अच्छा है। बॉल थ्रो करते और एट द हैं। सेम टाइम धीरज का जो फुटवर्क है वो अच्छा है। तो या डिफरेंट स्टाइल्स है, डिफरेंट मतलब जो होता है ना वो स्वीपर कीपर टाइप, तुम वो बना यस सकते हो। तो दोनों ने दोनों टाइप चीजें ऑफर किया। और धीरज को मैं पर्सनली चाहूंगा वो, और मतलब जो एसीएल चैंपियंस लीग 2 होने वाला है उसको पर्सपेक्टिव पे रखने के लिए उसको थोड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देकर रखना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी देना है। मोहन बागान नेक्स्ट सीजन 40 प्लस गेम्स खेलेगा, डूरंट कप सब कुछ लेके। सब कुछ तो लेके सिर्फ विशाल केत को उतना प्रेशर नहीं देके एक बैलेंस रखना चाहिए, 60-40 का बैलेंस रखना चाहिए। लाइक 40 मैचेस 40% मैच धीरज खेले, 30% मैच धीरज खेले, बाकी मैच विशाल ने खेले। थोड़ा यस इंटरचेंज होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, मतलब यस इतना यस प्रेशर विशाल केत को। और एट द सेम टाइम विशाल केत इज गेटिंग नेशनल टीम कॉल अप्स, he will be a यस regular by यस, AFC qualifiers. नेक्स्ट So सीजन, that या pressure is on. गोइंग फॉरवर्ड। That pressure is या on. Like on an average, ट्रू। Vishal Kedis will be playing like what 54 matches, which is a huge thing, for, huge fixture for. So उतना प्रेशर नहीं देके अगर एक बैलेंस क्रिएट करा जाए, और विशाल और धीरज इज अ प्रूवन गोलकीपर, the या management needs to trust him. Like these kind of performance, this is why second team and the reserve squad needs to step up. इसके वजह से ये सब प्लान हुआ है, and he has नहीं, shown फैंटास्टिक। his step. ट्रू ट्रू, क्योंकि 3 मैच या 4 मैच इस बार खेले हैं ये सीजन, उसमें 2 या 3 तो उसका क्लीन शीट है। आज भी ऑलमोस्ट क्लीन शीट और था। एक और काउंटर आर्गुमेंट है, जो कि विशाल के धीरज दोनों, मतलब दोनों के पास दो अच्छा सेंटर बैक पेयरिंग होता है, इसके लिए वजह से वो क्लीन शीट रख पाता है। आज का मैच में सिर्फ नुनोरेस जो 1 साल बाद फुटबॉल खेल रहा है वो था, दीपेंदु था, अमनदीप था। अमनदीप था। फिर भी विशाल केत ने मतलब एक मास्टर क्लास, एक गोल खाया है, होता है वो, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जो स्टैचर का टीम था, उनका जो स्टैचर का टीम था, ऑफ कोर्स एक गोल होता है, लॉ ऑफ एवरेज को रख के एक गोल होना चाहिए था। उसको साइड पे रखते हुए पूरा मैच में अगर धीरज सिंह कुछ भी स्लिप अप किया है, नहीं, he was नहीं, outstanding. He was like he was आउटस्टैंडिंग, उसने बचाया। he has shown that he was in the team, he is playing in the team for a long time. He gelled up in no time, so that speaks. ट्रू 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 ट्रू। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर दीपेंदु। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, डू यू स्टिल थिंक टू ब्रिंग मेहताब और एनीवन? Deependu is really doing well. I think you need to trust that guy, man. He is doing well. Today 2-3 क्लियरेंस उसका ऐसे सिचुएशन में था ना जहां पे हो सकती थी कि केरला ब्लास्टर कुड हैव कैपिटलाइज इट, बट ही वाज वेरी स्ट्रांग एंड एट द मोमेंट। हाँ, तो फिजिकलिटी है, करेगा, सीखेगा, क्या प्रॉब्लम है? बट डू यू थिंक वी नीड ए मोर मतलब प्रूवन डिफेंडर, और कैन वी ट्रस्ट दिस गाय? He is a fantastic guy. He's a future Indian defender. I'm telling you, Indian team defender. ना मेरा एक दोस्त है, मतलब दोस्त है, भैया दोस्त है, उसका अरिंदम दा उसका नाम है, वो कम्युनिटी में आता है। उसका एक ये था, कोट था, जो कि जब जब टाइम हम लोग दीपेंदु को लाए हैं, तब तक टाइम हम लोग खुद के मर्जी से दीपेंदु को नहीं लिखे है। वी नेवर रियली ब्रॉट दीपेंदु ऑन आवर ओन। एक प्लेयर चोटी मतलब इंजर्ड इंजर है, हो गया, समवन इज इंजर्ड, समवन इज रेड सस्पेंडेड, कार्ड हो समवन गया। इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर गेम, वी बॉट दीपेंदु। We played हम्म Deependu in a right back position, at center back position, wherever he wanted, wherever the team wanted, he delivered. He actually delivered and राइट। played exceptionally well, and he never did it. He never really slipped up that much
For his age, he played really maturely. Yeah. But at the same time, the management never really played on their own. He never played. मतलब वो खुद से मैनेजमेंट वो खुद से मतलब हम लोग दीपेंदु को आज रखेंगे, खुद से नहीं था वो। प्रॉब्लम में आया है फिर दीपेंदु का हम खेले और वो टाइम में डिलीवर भी किया है. So that speaks volume. You can trust on this guy. But at the same time, दीपेंदु का एज कितना है, मतलब बहुत ज्यादा तो एज नहीं है. एक्सपीरियंस मैटर कर, कुछ कुछ जगह एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो होता है. बट ये टाइम है ना, जो वो टाइम में दीपेंदु अभी है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है प्लेयर्स को थोड़ा बैलेंसिंग में आना. मतलब इतना मैच तुम इतना छोटे टाइम में, जो बार्सिलोना में होता है पेद्री के साथ, इतना छोटा बॉयस में वो मतलब एज है उसमें इतना 40-45 मैच खेला दियो. अभी वो ACL हुआ है, इंजुरी होता है, बहुत इंजुरी प्रोन होता है. अगर तुम बैलेंस में अगर ये टीम प्लेयर लोग को नहीं खेला तो इन प्लेयर लोगों का फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इंजुरीज टाइम में. इतना अगर लोड देते तो 1-2 सीजन में ना इनको एक पेयरिंग में, एक इंडियन CB बा फॉरेन CB, एक्सपीरियंस फॉरेन CB के साथ पेयरिंग में रख दे तो ना ये लोग सीखेंगे. कितना मेहताब सिंह बा, कोई भी नॉट मेहताब सिंह, बहुत सारे इंडियन CB है, उनको अगर लेके आते हो कितना साल खेलोगे, 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल दीपेंदु के साथ, फिर तो दीपेंदु है, 5 साल 6 साल तो दीपेंदु है, फिर खेलोगे. ये टाइम में अगर वो डेवलप होता है, वो एक्सपीरियंस गेन करता है, तब वो बोथ क्लब एंड प्लेयर को बेनिफिट करता है. इट डेफिनेट्स बोथ पार्टीज. दैट इज व्हाई वी नीड मेरा इट्स माय पर्सपेक्टिव, इट्स होनली माय, नॉट नथिंग न्यू. इट्स नॉट अ इट्स वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव. और लोगों का और पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैं कुछ नहीं बोल सकता वो. बट फॉर द टाइम बिंग वी शुड buy a experienced CB, play him for 2 seasons or 1 season, then we should give full chance to Deependu. राइट. मैंने ना अभी 2 महीना पहले अनवर अली इन मोहन बागन वर्सेस दीपेंदु मैंने एक वीडियो बनाया था. एंड उसमें मैं स्टैटिस्टिक्स पे जाता हूँ. मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर नोज, मैं स्टैटिस्टिक्स पे डाटा पे मैं काम करता हूँ, मतलब वही करता हूँ. आपकी एक है अमई करके है, अमई स्पिक्स करके एक है, जिन्होंने पाइथन में पूरा डेटा जो रिप्रेजेंट किया था, मैं उसी डेटा को यूज किया था. एंड वही पाइथन डेटा को हमने देखा तो पता चला ही वॉज पार विथ अनवर अली. द अनवर अली सीजन जो उन्होंने अनवर अली मोहन बागान के लिए खेला था, ही वॉज पार. कुछ जगह पे अनवर अली वॉज बेटर, नो डाउट, ही इज अनवर अली, बट Deependu was on the neck. So he is progressing, or as one of the best example of it. So I'm sure the way you told, it's more on the time he will slowly getting more experience. और इंडिया है ये यामाल सिचुएशन नहीं है, स्पेन नहीं है. यहाँ पे 24-25 साल के, मतलब 24 to 25 ईयर्स के बाद टीम प्लेयर जो है पिक करते हैं अपने परफॉर्मेंस, नहीं के 16 साल से. सो ये इंडिया में होती है ऐसी, हमने बहुत बार देखा है. 24, 25, 26 में लोग पिक करते हैं अपने परफॉर्मेंस. So I'm sure he will pick it up and he will be the main player for Mohun Bagan going forward. Maybe a captain. नहीं देखो, नेक्स्ट चलते. हाँ बोलिए. लास्ट में जो बोला अनवर अली दीपेंदु को, अनवर अली को मोहन बगान विलिंगली उनको टीम में रखा था, इसलिए वो उतना परफॉर्मेंस किया है. दीपेंदु को मोहन बगान अनविलिंगली खिलाया है. जब प्रॉब्लम हुए तब अनवर अली जो साइनिंग हुआ था वो बिग साइनिंग था, बिग इंडियन CB साइनिंग. Yes, he was experienced and Mohun Bagan was willingly played him in the main team squad. But Deependu was initially a second team squad. He was in the CFL, but he was promoted because he is too good. The problem is Deependu and Anwar Ali is going neck to neck because Anwar Ali ने बहुत ज्यादा मैचेस खेला है दीपेंदु से. दीपेंदु थोड़ा कम मैच खेला है. अगर सेम पर्सपेक्टिव में रखते थे ना, तो वो लोग थोड़ा एक ही टाइप के, एक ही इक्वल स्टैट्स ही निकाल रहा था. ट्रू, यही होता है. या राइट. अभी मैं अब 2 फुलबैक के बारे में बात करूंगा. ये 2 फुलबैक इतने अच्छे थे, मतलब दे आर रियली, देखो केरला की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है देयर अटैकर्स, राइट. देयर फॉरेन अटैकर्स, दे आर वेरी गुड, टू गुड. जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यार उनकी अटैक और जिस तरीके से पर्सपेक्टिव है उनकी गेम प्ले में, एक गोल तो बनता ही है उनकी तरफ से. पर आपके जो फुलबैक्स है ना, दे हैव बीन रियली रियली गुड. एक छुपा के क्यों रखे थे, हमें चाहिए दे दो ओडिशा को. ट्रांसफर फी दे दो, अच्छे से हम दे देंगे, चिंता नहीं. ट्रांसफर फी दे दो. Jokes aside, but they're really good. But they're really good. Jokes aside, these guys like especially Amandeep, this Amandeep guy was scrutinized a lot, even from me, even from the guys from MBFT,
everyone was scrutinizing Amandeep for his last season antics. वो एक रेड कार्ड खाया था, अनप्रोफेशनल रेड कार्ड खाया था, उसके बाद से वो थोड़ा स्क्रूटिनी में है। और वो आरएफडीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, नॉट बैड नॉट गुड, डिसेंट परफॉर्मेंस किया था। बट द मोमेंट ही स्टेप्ड अप इन द फर्स्ट टीम, he was playing like he was there for like 6 to 4 months। वो खेल रहा 6-7 महीने, वो फर्स्ट टीम का ही प्लेयर है, वैसा खेल रहा था। अमनदीप अमनदीप जो प्लेयर है, ये लोग जो पर्टिकुलर पे अमनदीप जो होता है, जो ये तो सालाउद्दीन, नॉट ओनली फुल बैक्स, द सालाउद्दीन अदर विंगर, they were playing like first team players, they were looking like they were playing for the first They time. are. They were are looking like first first team team players. players. They have been playing Yeah. ISL for quite some time, but they never played it ISL past 10 minutes, or they never really did double digits in ISL minutes. But they did. They showed because this is Mohun Bagan. The moment you wear Mohun Bagan's patch, you need to show your strength and stuff, that your figure. That this is the figure, you have to step in that. Then you are a Mohun Bagan player. So you have to improve that, improve a lot to get in the first team. This is basically the benchmark of Mohun Bagan. Like, they get players, if they fulfill this benchmark, then we will take them, and if they fulfill this benchmark, then we will take them in the first team. So this benchmark is already higher than most of the ISL clubs fielding their Indians. इसके वजह से ये लोग इतना अच्छे, जो प्लेयर्स तो मोहन बागान इसलिए ये लोग प्लेयर, मोहन बागान जो तुम बोलते हैं इतना बड़ा क्लब है, ये इट्स अ ह्यूज क्लब, इट्स अ बिग ह्यूज रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ द game, because of the players they get, because of the standard of the players they get. Like, they are playing bad in Mohun Bagan standard, not in the ISL standards. They're playing actually good in ISL standard, but they're playing bad in Mohun Bagan standard. That is why they're getting through a huge routine, under huge. Like, Amandeep was playing bad, but he was playing bad under Mohun Bagan standard. But if he goes to another club, he will play well, because their standards are low. It will sound very harsh, but it is the truth. It is basically the truth of the management. This is how they portray the. True, that's what I always say in my videos कि यार ये मैनेजमेंट जो है ना, ये इनके अपनी बेंचमार्क बनाते हैं, अपनी तरीका है, अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं. That's why we are able to see. We will be coming, guys, on that part कि why Mohun Bagan is winning everything. Like, is like the team to watch out. We'll be discussing on upcoming next 10 minutes, but we'll be focusing on Salaluddin. When Manbir was not playing well at the start of the season, mid of the season, बाद में तो pick up किया उसने. I was keep on talking Tyson and this guy. They are doing very well in the CFL and यहाँ पे बहुत अच्छे कर रहे थे. So I was thinking कि क्यों नहीं चांस दे रहे? Do you think it's a right time now? At least next season, we would like to see 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes of Salah, maybe Tyson, Manbir to thoda. How do you see? Actually, we want, because the matches, the intensity of matches Manbir has been playing, like they are playing what 30 to 40 matches every season. 30-40 तो मैच खेल रहे हैं वो लोग, full match, full 90 minutes, even 110 minutes extra time. The gap between the fixtures are getting less and less. The intensity of the football matches they are playing, it's not healthy actually for the players. So you need to find a balance. जो balance मैं बोल रहा हूँ, जो कि एक balance खोजना था, जो धीरज विशाल का टाइम में था, एक बैलेंस. इतना मैच खेल रहा है विशाल के, इंजुरीज होता है, और ये लोग नेशनल टीम में भी जाएंगे, तो इन लोगों को फिट रखना पड़ेगा, और इन लोगों का बैकअप भी चाहिए हम लोगों को. लाइक तुम मनवीर सिंह को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 120 मिनट दौड़ लेफ्ट फ्लैंक में, राइट फ्लैंक में दौड़ कर. नो, यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू स्प्रिंट लाइक अ मैडमैन. ही इज नॉट अ रोबोट. सो यू नीड रिप्लेसमेंट. जैसे आशीष राय का रिप्लेसमेंट, वी नीड आशीष राय रिप्लेसमेंट्स, एंड वी नीड मनवीर सिंह रिप्लेसमेंट. दीज गाइज आर द रिप्लेसमेंट. वी डोंट नीड टू बाय फ्रॉम another club anymore, because we have that replacement. And I don't know why the management is not picking up there in the first squad, because of the salary cap or whatsoever. Salary cap is a factor why they are not picking up in the first team. But at the same time, we have those players who can replace them, and they can do a decent to good enough job to replacing them. Like अगर मनवीर सिंह हाफ टाइम में, like गोवा के अगेंस्ट मैच चल रहा है, और for 60 minutes में वो थोड़ा एक मतलब क्रैक, मतलब कुछ होता है ना, मतलब अगर इंजरी पिक कर लेता है, थोड़ा माइनर इंजरी पिक कर लेता है, मूड अच्छा लगता है ना, आज नहीं है उसका दिन, हो सकता है. Then we can improve, then we can deploy this player, then we can use them.
it is that high. It is that time we can use them. But why the management is not using them? It is their plan. It is something going on with their plan. But we can use them. We have those way. We don't have to buy it from another elsewhere. ट्रू ट्रू, क्योंकि राइट साइड में आपके मनबीर के बाद कोई था ही नहीं. आपने अब्दुल Hmm. समद को खिलाया, मैंने एक दो बार देखा मैंने, बट इज नॉट वर्किंग आउट. बट He एनीवे, is बट not साला working for आज. because his हाँ बोले. because his, हाँ his बोले बोले. national position is a CM. यस यस. His national position is a बेस्ट टू बेस्ट number लेफ्ट 10 विंग, on बेस्ट टू बेस्ट लेफ्ट विंग, नॉट अ best to राइट. best like but he prefers the right wing. या But वो या वो मनवीर को पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता नहीं because कर सकते. track back the way हो Manveer हो Singh हो track back हो. या the that's Manveer why he Singh track always back left and helps both Ashish Rai. margin. The Yeah. one of the key points was made after the Jamshedpur game where we lost Yes. was Yes. the absence of Manveer Singh. Manbir Singh. The way he was track backing in the right channel and helping Ashish Rai was brilliant. It was shown, it was exposed that day. Sahal True, Abdul Samad true. can track back like that. He's a playmaker. Can Yeah. be a workhorse like when you say workhorse. True. या मनवी जो ऑफकोर्स, जैसे ऑल कोचेस लाइक वो आप स्टीफन कॉन्स्टेंस से स्टार्ट करके आप इंडिया कोचेस देख लो, आपके मोहन बागान कोच देख लो, पहला नाम रहता है मनवीर भाई का. जबकि सब लोग बोलते हैं अरे Yeah, क्यों everyone मनवीर has को the सिलेक्ट same किया, बट opinion. मनवीर क्यों सिलेक्ट करते हैं भाई? इसलिए ना करते हैं कि वर्कआउट से इंजरी होती नहीं है भाई, पूरा 90 मिनट भागेगा बंदा. If he even is injured, he will injured for like what for a short time, 1 day or हाँ शॉर्ट टाइम. 1 week. हाँ He will like miss like वो 1 to 2 games maximum, ट्रू ट्रू but he ट्रू will ट्रू be ट्रू recovering by then. ट्रू. साला का वो जो असिस्ट था, कैसा मतलब फीलिंग है, मतलब जो मूवमेंट उसने दिया, एक अच्छा मतलब नहीं बस एक्सपीरियंस्ड वो इंडियन पूरा सेंटर पूरा बैक को उसने पूरा गिराया और इनसाइड गया और बॉल दिया. कैसा लगा, मतलब इज ही रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन फॉर द मेन टीम? पूरा 90 मिनट्स वो अच्छा खेला है. मतलब 90 मिनट्स में एक थोड़ा वो मिस्टेक किया. वन मिस्टेक ही डिड वाज ही डिडंट पास हाँ टू ठीक है. सुहेल. या एक होता है वो जजमेंट प्रॉब्लम होता या है, सब इंडियन प्लेयर्स में ही होता है. एक्सेप्ट दैट ही डिडंट डू अ कैटास्ट्रोफिक जॉब. अच्छा खेला है. मिलोस टिंचिस एक इतना बड़ा स्टैचर का, इतना फिजिकल प्लेयर को बीट करके वो गोल किया. मिलोस टिंचिस इज अ रियली फिजिकल प्लेयर. और वो साला का जो फिजिक है और मिलोस का जो फिजिक्स है उसको कंपेयर करो. वो उसको बीट करके फिर साहल को बॉल दिया, फिर साहल उसको अबर फ्लिक करके गोल किया, गोल किया. ट्विस्ट करके गोल किया. मतलब डू यू थिंक इन लोगों का इन एवरी प्लेयर नॉट ओनली साहल साला साहल का भी इन लोगों का फिटनेस लेवल कितना अच्छा है. अगर वो प्लेयर फिट नहीं रहता है, मतलब इतना वो शेप में, अगर वो शेप में नहीं रहता तो वो कर नहीं सकते. इसलिए बोलो. ट्रू ट्रू. Now, do you think the Super Cup is very crucial for Abdul Samad? If Abdul Samad keep on playing the way he is playing today, or he played today, his chances in national team will be back again. Do you think? And his fitness is a नहीं. concern. ये सीजन मैं बहुत ज्यादा कंडेम किया हूँ फॉर हिज फिटनेस एंड थापा. सॉरी टू से, बट दोनों की ना क्या कर रहे थे पता नहीं यार. आई एम सॉरी टू से, बट they had a very fantastic chance. Greg was injured. They had a chance to play lot of matches, Yeah, but they both are injured. What happened? actually, look, the problem with Thapa was he was injured later in the season, the last moments of the season, in the last push of the and before that he was not at all an injured prone guy. He actually recovered fast. He never really missed matches, trainings, whatsoever. But that injury was different injury. That injury I cannot talk publicly about that, but that injury was different kind of injury. We cannot force him, but he still did well in the Goa match and in the playoffs. He didn't play like Thapa we used to know, but he still played well, good enough. The problem, the I want to go back to the question that how important is this for Sahar? This whole Super Cup is important for each and every player. Each and every player should be it's equally important for them. It's very important for Dhiraj, as well as Ashik Kurunian, as well as Salahuddin, as well as Amandeep. Every each and every player, each single player has a point to prove, point to make, or like Ashik Kurunian has a point to make to the national team. He is fit. He can play 90 minutes. He can take the workload after that horrible injury he had in Thailand. In perspective to Sahal picks up injury every 3 to 4 matches. Now he's showing that he is capable of playing 90 minutes. He wants to keep that going in the national team. Amandeep want to
stop like full getting. He wants to silence those scrutinies. One of me is them. One of them is me. Like he want to silence them. Salahuddin wants to show why he is one of those uh, players who can replace the first team players if they pick up some injuries or they are not in the form. As well as Nuno Reis, like he was sitting for like he was sitting for like 1 year. 1 year That इंजरी की बात. kind of profile of player, that stature of player, who will be happily can sign in any other club in A League or in the ISL. Like he can currently he can sign in the A League and he can आराम start से. there. Sitting there, but it is each and every players is important for the each. It is important for each of every player who those who are involved. Each and every player, like, and not only the players, the coaches, especially Bastav Rai. Like no one was talking about him. I don't know why Yeah. no one is talking about him. Like we are talking about it, Khalid Jamil. We are talking about other Indian coaches who are in this field, but we are not talking about Degi Cartos or Bastav Rai. We are not. Why are we not talking about these guys? They took like the RFDL squad and with one experienced foreigner and two injury prone national team and beat Kerala Blasters. That same Kerala Blasters who dominated East Bengal. Yes. Why are we पूरी not talking तरीके से. about it? So it is a proving point for each and everyone who is in the squad, who is not even in the playing field, who is yeah, driving the car or driving the bus to play, scoring the goal. Each and everyone, and also I never mentioned Suhail. Suhail was चल Suhail बहुत. is not Suhail was had trouble finding game time because of the stature of strikers we have. But True. yeah, this is basically it. बट वो भी बहुत अच्छा गोल था मैन. वेरी गुड गोल. वेरी गुड मूवमेंट. एंड ये But एक पूरा actually a great नंबर 9 वाला गोल है. नंबर 9 वाला गोल है ये. and it was a great playmaking by Ashik. हाँ वो आशिक तो ने है इतना ही. अच्छा प्लेमेकिंग वो तो बहुत अच्छा मस्त किया. प्लेमेकिंग या आसिफ का जब सिलेक्शन हुआ था ना इंडियन टीम में, बहुत लोग ना मुझे आके पूछ रहे थे कि यार कैसे सिलेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इंजर्ड है, वो तो मोहन बगान में ही रेगुलर नहीं खेल रहा है. मैंने बोला भाई ये बंदा लेफ्ट बैक खेल सकता है, लेफ्ट विंग खेल सकता है, अटैकिंग मिडफील्ड खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है, और क्या चाहिए तुम्हें. और तुम्हें मान लो ऐसे जब स्पेनिश कोच आते हैं ना, वो चाहते हैं हर प्लेयर जो है डायनामिक हो और हर जगह खेल पाए, क्योंकि वर्सेटाइल कब उनको कब जरूरत पड़ी या वर्सटाइल हो, कभी यहाँ पे जरूरत पड़ी तो, क्योंकि वो बोस को लेके गए थे, रोशन वॉज नॉट नो दैट फिट, तो वो बोले कि यार मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो जहाँ पे मुझे चाहिए खेल पाए, और वो बंदा वो है. अब फिटनेस इशू था, ये था, वो तो मोहन बागान और मानोलो देखेंगे, मेरा काम नहीं, बट मैं डिफेंड करूंगा उस बंदे को, क्योंकि वो बंदा टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है. फिजिकलिटी, फिजिकल जो है ना, वो इंडिया में बहुत कम लोग उस फिजिकल स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं. मनबीर एक है, ये एक है, ऐसे फिजिकल बहुत बंदे नहीं है हमारे पास. तो वो बंदा वो है, और वो आगे जाके दिखाया मोहन बागान फैंस को और राइवल फैंस को कि भाई देखो मैं किस क्या हूँ, मैं जब फिट हूँ तो मैं क्या हूँ. और ये आज नहीं, आप जमशेदपुर मैच देखो, वहां पे एक बहुत क्रूशियल मोमेंट में उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाया, आज दिखाया. सो ही इज ऑलवेज द प्लेयर टू वॉच आउट, नो डाउट अबाउट इट. अब मेरा पहला क्वेश्चन, ये जो एनवायरमेंट आपने निकाला है ना, ये जो रियल मैड्रिड वाला एनवायरमेंट, कि भाई रियल मैड्रिड में मैंने जब रोनाल्डो गए थे स्टार्टिंग में, रोनाल्डो बोले यार एक मैच हार जाते हैं सब मुंह सुखा के रहते हैं, छोटा सा ही मैच था, सब मुंह सुखा के बैठते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, मैं रोनाल्डो हूँ, मेरे को भी खाना ठीक से कोई देता नहीं है, खाना देने वाला मतलब द कुक, वो सही से चीफ जो है बिहेव ठीक से नहीं करता है, बिकॉज आई लॉस्ट इट, आई लॉस्ट द मैच, मैं एक ओपन गोल छोड़ दिया था. सो दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट. तुम हार नहीं सकते भाई, तुम हारोगे तो तुमको कोई छोड़ने वाला नहीं है. क्या दैट मेंटालिटी यू गाइज हैव स्टार्टेड इट, और दिस इज हाउ द हिस्ट्री ऑफ मोहन बागान, कि भाई no, हमें जीतना है, this तुम actually the जीतोगे नहीं तो history. भाई तुमसे कोई बात नहीं करने वाला है. सॉरी ना दिस इज बॉस, तुम एक्चुअली द कोई भी हो हिस्ट्री. सकते हो. देखो ना, तुम अगर मोहन बागान का हिस्ट्री देखो, वो जो टाइम लाइन, इफ यू सी द टाइम लाइन, मोहन बागान हैड अप्स एंड डाउन्स. ऑफ कोर्स एवरी क्लब हैज अप्स एंड डाउन्स, बट मोहन बागान जो डाउन में रहता है ना, मोहन बागान डाउन मतलब रेलीगेट, मोहन बागान कभी रेलीगेट नहीं हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से कभी रेलीगेट नहीं हुआ है. अगर डाउन में भी रहता है फिर भी वो कप जीतता है. लाइक वी वोन सीएफएल इन आवर वर्स्ट टाइम्स, even federation cup in our world times, but we won cups. So, or on the other hand, clubs fail to reappear, fail to play. They get relegated, some get dissolved, but Mohun Bagan was one of them because of the never giving attitude. It's not about dominating attitude, it's about never giving attitude. Whatever we have, whatever
if we have a, let's say our coach is bad, we will replace him, we will get a better coach. We have our management bad, our management is not capable enough, we will change our management, because it is a supporter based club. As well as the supporter is very keen for the, they, they are very keen for their club. They want to they want to see success, nothing else. But at the same time they are very realistic. That is why we are here. And we never really, we never had this environment actually. Like, if we lose, we don't talk, we don't have this environment until the ISL came. The moment we entered ISL and winning the matches, we were dominating. But the moment we lost to East Bengal in the Durand Cup in the first match, we experienced one of the worst nightmares of our footballing supporting yeah, culture. Player buses were attacked, if I'm not very wrong. So that moment realized, that moment I personally realized, the players buses were attacking, supporters were, facing online brutal threats and what's. That moment we realized, like, this is the time we are, facing the Real Madrid problem. The moment we lose a match, it's like losing a cup final or using a shield. Like, no one really expects Mohun Bagan losing. Everyone expects that Mohun Bagan, show up in the right time, right place at the right time. So this is why it is. But this is the thing. And if you see the home record of Mohun Bagan, we never really lost a match. Never lost a match. We were unbeaten, except the Mumbai match we withdrew, but Yeah. we won every single matches. So this speaks volume. This is the reason why people, behaves like that. True. I agree. I personally believe that that environment जो आप लॉकर रूम में लेके आते हो, आपके मैनेजमेंट में लेके आते हो, हर क्लब में हर कॉर्नर पे ये लेके आते हो ना, ये कंफर्ट नहीं है भाई. तुम कंफर्ट में नहीं बैठ सकते. तुमको तो परफॉर्म करना है, नहीं तो भाई यू आर आउट. हो सकते हो तुम कोई लेजेंड ना, भी हो, डजंट कंफर्ट मैटर. ये थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव बोल रहे हो. ये तो हाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, नॉट कंफर्ट. ये प्लेयर लोग को कंफर्ट मतलब क्या बोलते हैं, ये प्लेयर लोग के इतना अच्छा इन्वायरमेंट दे देता है, so they are हाँ compelled to perform well. परफॉर्म वेल. इतना अच्छा, ओके. लाइक दोस्त लोग के साथ रहते हो, इट्स लाइक हाँ दोस्त लोग के साथ रहते हो, तो दोस्त लोग 4-5 हाँ दोस्त लोग के साथ जो होता है, ये हाँ 4-5 का दोस्त लोग का ग्रुप एक 24 या 30 जन का ग्रुप हो जाता है. जैसे तुम्हारा 30 जन का ग्रुप है, सब भाई लोग है, ठीक है. ये भाई लोग का ग्रुप में एक डॉन, मतलब एक डॉन टाइप लोग है, वो मोरिना जो होते हैं, हाँ जो मैनेजमेंट ऑब्वियसली. उनका डॉन टाइप एक लोग रहता है, उनका हाँ बात सुनना पड़ता है. डॉन भी अच्छा आदमी है, ठीक है, फिर हाँ भी तो उनका बात डॉन तो सुनना बहुत पड़ता अच्छा है. है. जो होता है ना राइट कॉलेज में, जो होता है ना सीनियर, उन लोग का राइट. बात सुनना पड़ता है, बट सीनियर अच्छा होता है अल्टीमेटली, ठीक है, अल्टीमेटली कोई बुरा नहीं करता सो है, तो वो होता है. एनवायरमेंट बना के रखे हैं, बढ़िया से एनवायरमेंट बना के तो रखे हैं, मतलब एक फैमिली एनवायरमेंट. टाइम टू टाइम प्लेयर लोग असाइनमेंट में हेल्प करता है, मतलब दोस्त लोग असाइनमेंट में हेल्प करते हैं, असाइनमेंट जॉब टाइम में सबमिट भी करता है. तो इट्स अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, लाइक इट्स लाइक अ फ्रेंडशिप. कॉलेज में जो फ्रेंडशिप रहता है हम लोगों का, ऑफिस में जो फ्रेंडशिप रहता है, नॉट टॉक्सिक फ्रेंडशिप, मतलब जो फ्रेंडशिप रहता है या एक साथ का, वही फ्रेंडशिप को रेप्लिकेट करता है मोहन बागान ड्रेसिंग रूम. परफेक्ट जस्ट परफेक्ट. हेल्पिंग ईच अदर, शोइंग अप फॉर ईच अदर. मैं एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ यहाँ. मोहन बागान का एक फिजियोथेरापिस्ट है, वो फिजियोथेरापिस्ट बैरकपुर साइड से आता था. बैरकपुर इज लाइक 50 किलोमीटर, 36 to 40 kilometers अवे फ्रॉम द स्टेडियम, जो मोहन बागान का ट्रेनिंग ग्राउंड था. वो 36 किलोमीटर ट्रेवल करके रोज ऑफिस आता था. तो प्लेयर्स लोग क्या किए, कुछ अपने सैलरी से एक डोनेशन फंड बनाया, 24-25 जो प्लेयर था, कोच ने भी कुछ दिया, सुहाइल बोस ने कुछ दिया, वो सब डोनेशन मिला के वो फिजियोथेरेपिस्ट को एक बाइक गिफ्ट कर दिया था. एक पूरा अच्छा, मतलब हीरो होंडा का जो बाइक, मतलब पूरा नया बाइक गिफ्ट किया था. तो ये एक, मतलब क्या दोस्ती का ये है, जो कॉलेज में दोस्ती होता है, जो कि हम एक के ऊपर को मजा करते, मतलब लेग पुलिंग बुलिंग करते, फिर भी हम लोग दोस्त होते. ये इन्वायरमेंट है, मतलब उतना प्रेशर जो तुम प्रेशर का बात करो, वो प्रेशर वो टाइप का प्रेशर नहीं रहता है. वो उल्टा टाइप का प्रेशर रहता है, क्योंकि तुम इतना अच्छा दोस्त लोग है, मतलब पावर ऑफ फ्रेंडशिप इतना अच्छा है, वो तुम कंपेयर कर देते हो, हाँ भाई अच्छा खेलना पड़ेगा, दोस्त लोग है भाई. नाइस यार, नाइस, सच में यार. By the way, there has been lot of point out that your development about Mohun Bagan. How do you see how things are moving as part of Mohun Bagan your development? Hey, still there is a whole lot of room to improve. भाई बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है. इट्स स्टिल इन द इनिशियल स्टेजेस. एमबीएफटी एक पूरा, मतलब एमबीएफटी जो प्लेटफॉर्म है, जो मोहन बागान का यूथ लेके
डेडिकेटेडली काम करता है, मे बी थोड़ा उसका चक्कर में मे बी थोड़ा पार्ट हूँ। ये एक डेढ़ साल में जो टर्नओवर हुआ है हम लोगों का यूथ में, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स इनक्रेडिबल। खूब बहुत ज्यादा आईएसएल क्लब्स विदाउट एनी रेसिडेंशियल एकेडमिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा स्काउटिंग नहीं कर सकते, स्पेशली कूडोज गोस टू डे कार्डोसा एज वेल। डे कार्डोसा वास्तव राय भी अच्छे अच्छा है, बट डे कार्डोसा का स्काउटिंग इतना अच्छा है, स्काउटिंग की वजह से ही हुआ है। इट्स अबाउट गुड स्काउटिंग, good managerial skills, and believe in yourself. If I'm not very wrong, Mohun Bagan never had this youth setup 2 years ago. Not even 2 years ago, we didn't had this level of youth setup. But 2 years after 2 years, couple of years, we are here. Imagine if we give this management 5 years more of a time, like if we flat 5 years, what they can achieve, what they can do. Imagine we give that amount of time, they can do wonders. Because the last 2 साल का जो time plan है, they are delivered. But at the same time, we have a whole lot of room to cover, because majority of the players Mohun Bagan is signing and employing and delivering, they are not from the local regions of Bengal. Now Mohun Bagan's main priority should be developing the locals, like players like Deependu. We want, like we developed a Deependu, we want more of Deependus like him. A Deependu who is playing in the striker position, a Deependu who is playing in the left back position, or the right wing position. We want more of Deependus, as well as more of Sahals, more of Suhails, more of Prem Hasdak from Jamshid Jharkhand. We want all of them. We want more of the locals. There's a whole lot of room to improve, but the progress they have made in the last 2 or 1 year is fantastic. Fantastic. Exactly, and it's one of the highlight is RFDL. Not only RFDL, I think all age group you guys have dominated in the Indian football. So it's a fantastic job, no doubt about it. Now, last but not the least, यार आप टीम ऐसे कैसे बिल्ड करते हो यार? सुपरस्टार का टीम यार एक सीजन में तो लाते नहीं हो आप, ऐसे एक एक करके कैसे टीम बनाते हो? मतलब who is behind this whole idea of building this team, and who is the Papa Perez? We want to know, and how things are moving ahead here. क्योंकि बाकी टीम में देखता हूँ, मैं मेरे टीम के बारे में बात करूँ तो हम कोच को लाते हैं और कोच जो बोलता है उसी को बुला लेते हैं, फिर कोच कुछ बेकार कर दिया या चला गया तो फिर से नया स्क्वाड करने का काम स्टार्ट हो जाएगा. एंड दैट हैपनिंग फॉर ऑल अदर क्लब्स, वी आर सीइंग एवरी टाइम, एवरी 2 years दे पूरा रिबिल्ड करते हैं. And that is where the football is all about, as you told, it's about the friendship. It's all about 26 or 30 people have a similar मोटो. इज नॉट क्रिकेट के भाई एक बैट्समैन खेल लिया तो गेम चला देगा. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 30 लोगों का माइंडसेट सेम होना चाहिए विद द डॉन. जो डॉन बोलेगा वो सब सुनना चाहिए. सो दैट्स हाउ ऑल अबाउट फुटबॉल इज. हर 2 साल चेंज होगा तो नहीं होगा ना. सो हाउ यू गाइस डू इट एंड हु इज द पापा पेरेज? ये एक थोड़ा कलेक्टिव, इट्स अ कलेक्टिव मेथड। लाइक हम लोग जो हमारे पुराना स्टाफ होता है उनका थोड़ा थोड़ा वैल्यूज लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं। लाइक इन फॉर एग्जांपल Alberto Rodriguez was picked up by none other than Antonio Lopez was his assistant, Manuel Cascanena. Manuel Cascanena suggested the Mohun Bagan management that you should go for Alberto Rodriguez. And Alberto Rodriguez was signed. If I'm not very wrong, even Mohun Bagan supporters were skeptical about Alberto Rodriguez. Like he's from Indonesia, he's not a big name from Australia, he's not a big name guy, but as he stepped in India, he was a complete beast. He was taking down strikers like momos and chais every day, each and every striker. No one really got past him. No, he did not make any mistakes. He was exceptionally well. This scouting was done none other than by the old staff of Mohun Bagan. So this is the collective method, and Mohun Bagan is not run by a single individual. Like the coach will say it, like coach whatever the coach is final. Sometimes coaches can get wrong. We have seen that. Sometimes coaches can get wrong. Sometimes the management can get caught. So it is a collective method. It is a collective method, and many of the like 4 to 5 peoples and 4 to 5 peoples or even the board, everyone is involved in these signings. Everyone says
whatever perspective they have, that perspective will be taken granted, then player will be signed. So this is a whole collective, not a single individual is in this process. स्क्वाड बिल्डिंग, बट ये स्टेप बाय स्टेप आप लेते हो, आप ऐसा नहीं कि पूरा टीम का चेंज कर दोगे एक साथ, ऐसा नहीं है आप, और एक साथ भी प्लेयर भी आप खरीदते भी नहीं हो। ये सीजन जैसे मुझे लगता है, आप कंफर्म भी कर सकते हो, ये सीजन आपको लगता है कि फुल बैक और सेंटर बैक पे हम काम करेंगे और एक सेंटर मिडफील्डर या अटैकिंग मिडफील्डर फॉरन लाएंगे, ये कंफर्म है और सबको पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, पूरा दुनिया को पता है, और उसी पे भी फोकस है, तो उसी का ही आप प्लेयर लाओगे। मिल गया कोई ऐसे कम में फटाफट तो दैट्स फाइन, बट यू गाइस फोकस्ड एंड यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव फॉर दिस सीजन। तो ये सीजन बाय सीजन आपने बनाया, आपने स्टार्ट किया है, आपको याद होगा विशाल के आपने लाया था स्टेप बाय स्टेप, आपने आशीष राय को एक सीजन लाया, आपने साहल को एक सीजन लाया विद थापा, ये लास्ट ईयर आपने ओपुया लाया, सो एवरी सीजन यू आर अपग्रेडिंग विद वन और टू प्लेयर। सो डू यू थिंक दिस इज अ राइट अप्रोच टू बिल्ड अ टीम रेदर देन पूरा स्क्वाड को होलसम चेंज कर देना? No. Yeah, actually, right. It's the perfect way, near to perfect way to build a squad, because you are addressing the problems within the team. You are not addressing the whole team, the actual particular problem to the team. Like it's a house. तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर का एक सीलिंग का पार्ट टूट गया, वो तुम फिक्स कर लिए, बाकी का चीज फिक्स करना कोई जरूरत नहीं, बाकी का चीज बहुत वेल एंड गुड है। कुछ अगर तुम तोड़फोड़ करोगे वो घर का स्ट्रक्चर बिगाड़ सकता है। इट्स लाइक अ हाउस, तो वो पार्ट को तुम फिक्स करो धीरे धीरे। मतलब हमारा एक गोलकीपर प्रॉब्लम था, वो विशाल का धीरज सिंह मोहन हमने आके फिक्स कर दिया। हम लोगों का एक मिडफील्ड थोड़ा हम लोग का मेसी था, थापा, साहल, दीपक टांगड़ी, ये लोग को इंटीग्रेट करने के लिए एक मिडफील्ड इंडियन मिडफील्ड लगा, वो अपुया ने किया। सेम फॉर हम लोगों का एक इंडियन प्लेमेकर लग रहा था, हम लोगों का एक सेंटर बैक था, वो तो चला गया फॉर सम रीजन, बट उसको रिप्लेस करने के लिए दीपेंदु भी आ गया। सो इट्स अबाउट लाइक अ हाउस, वी आर नॉट बिल्डिंग इट अबाउट द कोचेस पर्सपेक्टिव। कोच का भी कुछ पर्सपेक्टिव रहता है, वो बोल देता है किस किस टाइप का प्लेयर प्रोफाइल का प्लेयर वो लेके आ जाता है, बट हम लोग का क्या नीड है एक्चुअली क्या नीड है। हम लोग को बोल जाए तो हम लोग का 70-80 करोड़ का टीम है, वी हैव अ ह्यूज स्पेंडिंग पोर्टफोलियो। We are actually not huge spending, we are not a huge spender, we are actually a smart spender rather than like Kerala Blasters, East Bengal have been spending a lot. They are not spending like Mohun Bagan every day, but every year, but they have spent a lot, huge amount, but they didn't did an effective job on that. It's called effective spending. It's called effective spending after all. You need to be more effective with your thoughts, with your play. Like for example, East Bengal bought Jixon Singh for like what 3 crores, 4 crores nearly. We bought Hapuya in like what 1.2 crores or 3 crores. Yeah, that's less than half. And Apuya doesn't deserve that kind of transfer fees. Apuya is actually is worth of 2 crores, if I'm not very wrong. And the type of performance he is pulling, he should be worth more than 2 crores. But still, we got him like around 1.5 crores or 1.5 crores. So it's called effective spending. It's called effective buying. But at the end of the day, we are also relying on superstars, but effective superstars like Jamie McLaren. Jamie McLaren, this guy is effective. He will get like one, 2 touches and will score 1 goal or 2. He gets like 3 touches and score a goal. This is called effectiveness. Perfect. One question for you from ये कि क्या नुनो रेस का परफॉर्मेंस आप 10 में से कितना रेट करोगे? 7. Not bad, not good. फर्स्ट मैच बहुत एक साल बाद खेला है। आसिम वगैरह अच्छा किया डिफेंस में, मैं फिर भी क्वेश्चन पूछूंगा, बट इट्स फाइन, नया आया बहुत। Alberto Eldred का लेवल है, क्योंकि Alberto Eldred has been regularly playing in the ISL. You have to mention that, but they have been playing. He played good after a season of sitting and practicing. And as a matter of fact, Nuno had an operation. He had a medical problem. So after that operation and after those procedures, he played well enough. Played good actually. Personal question. Happy with Molina, the way Molina play the game, not winning and the game. Yeah, gameplay. He has some problems. He has some problems. Yes, so we can deny that. नहीं, आपका ओपिनियन है, आपको मतलब आपको अच्छा लगता है वो गेम प्ले? थोड़ी ओपिनियन मेरा ही हो, मतलब उसका प्रॉब्लम से मतलब अगर हम लोग
पर्सपेक्टिव को देखे, मतलब अगर यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखे, उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव, मतलब उतना अच्छा, मतलब आई प्लीजिंग गेम नहीं है, आई प्लीजिंग नहीं होता है वो गेम। बट एट द सेम टाइम वो गेम अगर हम लोग रियल मैड्रिड को देखे, रियल मैड्रिड कभी आई प्लीजिंग गेम नहीं खेला है। फ्रांस भी नहीं खेला, जो फ्रांस भी नहीं हाँ, खेलता है फ्रांस भी फ्रांस भी नहीं कभी खेला। आई प्लेजिंग नहीं खेलता है जितना लोग डोमिनेटिंग फुटबॉल, विच टीम प्लेज इन डोमिनेटिंग स्टाइल, दे डोंट प्ले आई प्लीजिंग फुटबall. They really don't play eye-pleasing football. Except Man City, they play eye-pleasing football sometimes, but not really. They don't play eye-pleasing football. But it's about effectiveness. How effective football you play. In the initial parts, Molina had some problems. He wasn't that effective. He wasn't effective enough. That is one of my main concerns about him. He was not at all effective. He was he was winning like one goal. He was winning matches by 1 or 2 goals, where he had a chance, to bury that opponent by 4 to 5 goals. But he didn't choose to play that way. He didn't choose to score like a little. Like on the other hand, Northeast was scoring five goals, 6 goals. Aladhi Rajane was scoring a hat trick, but our players didn't score a hat trick. But at the same time, our players didn't receive a red card. So in the later stages clean of sheet, the match, clean business, sheets, clean sheets, so many clean in the sheets. business sense, Molina was emphasizing on the fact that he want to keep clean sheet. The Yeah, that's clean what I'm sheet should saying. be the Clean sheet, more clean sheet we keep, important, the more effective confidence. will be the league will be. It's about goal difference. गोल डिफरेंस Yes. आता है, गोल डिफरेंस जीडी जो होता है, जो अल्टीमेटली इफेक्ट जो करता है, वो होता है, वो ये करता है, जो बुलेट का गेम इफेक्टिव है, नॉट आई प्लीजिंग। स्टैट्स अच्छा नहीं रहता है, मतलब स्टैट्स अच्छा नहीं रहता है, ये नहीं होता है वगैरह वगैरह, बट इट्स अबाउट इफेक्टिवनेस। अल्टीमेटली तुम कप जीत गए, वो मैटर करता है, उसका वही गेम है। अगर तुम आईएसएल कप का फाइनल देख लो, फाइनल में मोहन बगान इतना अच्छा भी नहीं खेला, मतलब फर्स्ट 40-45 मिनट्स आफ्टर वो जो गोल खाया जो ऑन गोल खाया, अंटिल मोहन बगान वाज नॉट दैट टाइप ऑफ प्ले, मतलब वो उतना शेप में भी नहीं था। द मोमेंट दे कंसीडर्ड द गोल, मोहन बगान टर्न्ड ऑन, they switched on and they played effective game, and they won it in the extra time, additional extra time. It's about effectiveness. I don't know how he's going to perform in the ACL, एशिया में कितना अच्छा करेगा, तो for the timing he's well good for the ISL Indian circuit में he's proven he knows his stuff, how to be effective, but at the same time I don't know how he's going to portray his game in Asia. But अगर मैं एशिया का पर्सपेक्टिव भी देखूं, एशिया में भी कोई उतना आई प्लीजिंग गेम नहीं खेलता, एक्सेप्ट नहीं खेला एशिया में, तो चांस नहीं है, बहुत कम है, भी आई प्लीजिंग नहीं होता है, वो भी इफेक्टिव फुटबॉल ही है, बट वो एशिया में कितना वो रेप्लिकेट करेगा वो इफेक्टिव फुटबॉल, वो डिपेंड करता है। ट्रू ट्रू। वन मोर क्वेश्चन भास्कर भाई का है, यही टीम जाएगी, यही टीम खेलेगी तो तुम्हारा फाइनल अगर भी? कोई प्लेयर, हाँ वो उन लोगों का प्लान ही वही है, अगर कोई टीम, मतलब प्लेयर लोग को तो वो लोग छोड़ भी दिया, रिलीज ही कर दिया, तो इन ऑर्डर टू गेट बैक दोस प्लेयर्स वी हैव टू कॉल बैक देम, and restart them again, so before 48 hours of the game रजिस्टर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो उन लोगों को फिर से बुलाना पड़ेगा। ओके लास्ट बिफोर वी एंड, कंट्रोवर्शियल देखो कैसे बोले, पर्सनली बोलो या किससे बोलना चाहते हैं? अब उन्होंने पूछा है एज ए हार्डकोर फैन, या पर्सनल क्वेश्चन है, हार्डकोर एमबी फैन, हार्डकोर फैन, लुक as a hardcore fan I want to keep him because of the clutch. He shows up at the most promising and the most कुछ नहीं होता है, जब हार रही है टीम, सब कुछ हो चुका, तब दिन शो अप करता है, वो टाइप का वो क्लच परफॉर्मेंस दे देता है दिल्ली। मतलब कुछ टाइम के लिए ना, ये सब टीम के लिए कुछ टाइम में ना ये सब प्लेयर खूब नेसेसरी होता है, कब काम में आ जाए तुमको पता नहीं है, यू डोंट नो व्हेन ही इज गोइंग टू वर्क और नॉट, बट इफ ही वर्क्स it is going to be a joy to watch him. Like he scored a goal against Odisha, none other than Odisha, that goal that we won in the Shield. No one was expecting that. We all expected that Mohun Bagan will draw it and will get it in the Mumbai game or even lose it in the process. But
he did what he does. He did what he does, like scoring in the dying moments when no one is expecting you to show up. सबसे unexpected ways में वो काम करते हैं. So you need some unexpected players in the squad. But at the same time, थोड़ा मैं hardcore होने से बाहर आता हूँ. For the squad dynamics, we can't keep the squad dynamics के perspective में अगर बोलता हूँ, it's tough for him. मतलब रख नहीं सकते, मतलब it's tough. It's tough to give him game time. अगर वो improve नहीं करता, अगर वो improve कर देता है, अगर वो if he improves and he goes back to his old form, what he did under Juan Fernando, what he did under Habas, if he gets that form, it is going to be lethal for the other teams. True. I think we are good and we have taken all the questions. Thank you, Anubrata Bhai, for being here and sharing your thoughts. Okay, last question. Don't you think Rimi should wow. leave because of same thing? I think we discussed about it, right? The same point. Yeah. Again, for transfer update, if there are questions came in, guys, the Super Cup team is in the semi-final. Let's rest till the whole calendar year completes. Then, like any hints you can give, like, or we can wait for the Super Cup to end. That's the better. How do you see? At least transfer hints दीजिए. ना भाई अभी तो कुछ नहीं, अभी बोल नहीं सकते कुछ. Yeah, it's very early stage. True. Very early stage. बोलने से ही प्रॉब्लम हो. Yeah, better. So that's what I Super Cup तक wait करना है. End तक. How do you see? Super Cup अभी देखो, अगर for example कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, if we are going for the title contention, तब तो तुम बोल नहीं सकते ना टाइटल कंटेंशन अगर हाथ देंगे. अगर थोड़ा मैं पर्सनली बोलता हूँ, मोहन बगान इज नॉट टाइटल कंटेंडर. पर्सनली आई फील मोहन बगान इज नॉट टाइटल कंटेंडर बिकॉज देयर आर अदर बेटर टीम. बट एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा टाइटल कंटेंडर था बेंगलुरु, वही सबसे पहले बाहर करा गया. तो वही तो कुछ बोल नहीं सकता अभी ना. तो ये बहुत unpredictable. We can count off anyone. Yeah. Right. Okay. So transfer guys, transfer update आपको मिलती रहेगी. Obviously, go and subscribe MBFT89. You will get an update always. And anyway, wait for the Super Cup to end. Then पूरा दुनिया खुल जाएगी और हर चीज पे पूरा ओपनली बात किया जाएगा, क्योंकि बंदे कॉन्ट्रैक्ट पे तब नहीं रहेंगे. हम बात करने भी इजी रहेगा, अभी मुश्किल है. चलो, थैंक यू अनुराध भाई. हाँ, जून महीना बाकी है, टाइम है. तो यस, एग्जैक्टली. Thank you everyone, and thank you Anuradha bhai, and keep loving Professor Kalinga and obviously MBFT. Bye bye.